Hi guys, welcome back to class of planning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. Today we are going to discuss one of the most known poetry for MEG 14. आपने इस MEG 14 का first question जो कि सिर्फ poetry से आता है, and we do have the options. Yes, we are having the options. Almost 6 options होती हैं आपको, जिनमें कोई 4 आपको करनी होती है. ऐसा 20 मार्क क्वेश्चन. तो सर यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि पोएट्री की कलेक्शन डेफिनेटली बहुत अलग है. उसको हम कैसे करेंगे? इट्स फ्रॉम द रीजनल पोएट्स ऑफ द इंडिया. तो उसकी कलेक्शन में मेरी जो फेवरेट पोएट्री है जो पेपर में कंफर्म आने वाली है, आई डू थिंक दैट इज सर. अब यहाँ आपने कहा यहाँ पे पोएट्री लिखी है, हाउ कैन आई वर्क इट आउट? रेक्विएम दैट इज, मतलब अगर मैं बोलूं इसको, दैट इज रेक्विएम सर. एक्चुअली दिस इज डिच अ मोurnful सर, मोurnful पोएम. किसी के लिए जब कोई एक्सपायर होता है तो उसके लिए, उसको याद करने के लिए जब हम पोएट्री लिखते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं डिच. Date is on from the Khasi language. Sir, Khasi, Khasi, Khasi language. Normally North East में मिलता है. हमने कहा North East writer definitely he was the one who नाम दिया वो आप लोगों को डिटेल में दिया है. उनके उसको ट्रांसलेट किया गया. सर ये ट्रांसलेट करके हमें बताया केन सिंह ने. उन्होंने हाईलाइट किया that it is a poetry which is all about the death of a lady named Mary. उसके बारे में बताया. It's a really a big point, I must say that. तो मैंने यहाँ सिर्फ आपके लिए एक आइडेंटिटी क्या इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि पॉइंट कौन सी है और कैसे क्लियर करते हैं, वो आप देख सकते हैं. यहाँ पे हम पॉइंट को पूरा शुरू से आखिर तक डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाई नॉट, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ूंगा आपके लिए. ये पोएट्री का सेगमेंट निकाल के लाए कि आप लोगों को 1 पर 1 सारी पोएट्री करवा दो कि पेपर से पहले ये वाला सेगमेंट है आपका ऑन्टोलॉजी. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएट्री नाउ. It's Requiem language Khasi we are having. The moons that floated, I repeat, the moons that floated into the still autumn nights were borne by the cold winds onto the season of carols. So ये यहाँ लिखा हुआ है. The moons that floated into the still autumn night were borne by the cold winds onto the season of carols. I heard them nightly beating against the window panes like disturbing tablets pleading to let me in. I heard them as I went to sleep and heard them as a rooster sounded his first call to the sun. I heard them as a class summoned schoolboys and the rest and heard them as boys lose the azan into a murky air which was wrong with the Mary. Sir, क्या करता ना मैरी ने वो ही अजान नहीं सुनी. She must have heard that azan in that morning in which she had died. Sir, वो उस मॉर्निंग को नहीं देख पाई. तो यहाँ पे we are being gathered, we have seen that lots of people are being gathered in the same spot on the death of a lady named Mary. अब वो क्यों gathered हुए? It's a mournful paragraph. Beginning में when I started the poetry, तो मैंने बोला यार it's a dirge. Dirge एक mournful poem को हम कहते हैं. यहाँ पे उसने highlight किया. And then the important part I must read for you guys. Here, look at here. कहता what was wrong with Mary? Her name calls upon God to protect. But there she was born as naturally as a sleeper snoring, no doctor come, and finally only 2 titanic tablets, one black and another with a crimson chest, tread with a slow hairy steps, like shankars of the night, and hold her off to their invisible lair. So this all tells about what had happened to Mary. मतलब डॉक्टर्स को बुलाया गया, क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, नहीं दिया, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है. एंड देन द सेकंड पैराग्राफ दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. Love broke into loud lamentations. The mother cried for divine explanation. Mourners raised the deathbed. A tent was erected. The countryside illuminated. The tearful whistle was kept up. For the 2 consecutive nights, packs of the guard were brought. Raucously jawed, senselessly careful. Her body was bathed and scented. Utensils were rented. सर हर वो प्रोसीडिंग बताइए जब एक आदमी एक्सपायर होता है उसके बाद जो किया जाता है. मतलब लोग गैदर होना शुरू होते हैं, वहां टेंट लगाता है, चीजों को हाईलाइट किया जाता है. अब इतने सारे लोग आएंगे तो अरेंजमेंट्स तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी. वो सारी चीजें यहाँ हाईलाइट की गई. एंड देन द पोएट्री टेल्स यू अबाउट द मेन इवेंट. शी वाज ड्रेस्ड इन अ फेवरेट क्लोथ्स, adored with her favorite tinkers. A funeral feast was hosted, church elders were invited. Almost everything as she wanted. जैसा वो चाहती थी सब कुछ वैसा ही किया गया. And all the papers were there. So all the people was there as per her wish. And then the court assembled, pairs were offered, coffee in dishes was ordered.
Summers were shouted, gossips were flaunted, palms were read, tea and biscuits were distributed. Then her sudden demise was sadly lamented. Such a young girl, such a sweet girl, such promise. But the actress offering some comfort, they were happy she went so peacefully. It is a ditch, so it's a mournful town, but here people are being happy that she goes so peacefully. But the main point is to crack this poetry to clear the concept. The writer, such as the poet, tries to give the complete detail. When a person died, तो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई वो सारी की सारी इस पोएट्री का पार्ट थी. And I guys really want you people to read this poetry from the beginning till the last ताकि आप टेस्ट को एक्नॉलेज कर पाए. जो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस है वो ये है कि आप इस पूरे टेस्ट को समझ पाए. You guys must have to clear the test. Grab in your mind because this will definitely come in a paper. ये वो पोएट्री है एमिली 14 की जो पेपर में रिपीटेडली आती है और मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे टेस्ट को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करो. जब आप टेस्ट को पढ़ पाओगे तो आप बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे कि आंसर लिखते आपको तीन चीजें क्लियर करनी है. रेफरेंस जो आपको देनी होगी, देन द कॉन्टेस्ट एंड देन लास्ट एक्सप्लेनेशन. And it's really easy to give the explanation of these poetries क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक sum up लिखना है. It's not as tough as British poetry. It's very easy. यहाँ सिर्फ आपको क्लियर होना चाहिए पोएट्री कौन सी है और कौन से पोएट ने लिखी और उसके कॉन्सेप्ट में क्या मैसेज पास आउट किया है. अगर इस पोएट्री का क्वेश्चन आरटीसी पेपर में आपको आती है और आप खाली ये बता दें कि कौन सा पोएट और कौन सी पोएट्री है, वो उसमें इट्स अ डच. हाँ, खाली इसमें डच है. द पीपल गैदर फॉर अ मॉर्नफुल एक्टिविटी, यू विल गोइंग टू गेट कंप्लीट मार्क्स. रीजन इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है जनरली, तो 20 नंबर छूटने चाहिए गाइस. इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेना होगा. नाउ प्लीज राइट डाउन समथिंग. मैं कुछ इस पोएट्री के बारे में बताऊं जो अगर आप लिख लेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा. राइट नाउ here the poem is all about the death of a, I repeat, the poem is all about the death of a girl named Mary. It's a dirge through which the close community people gathered, in which the close community people gathered for the bitter, I repeat, for the bitter irony in the sense that question, what could be wrong with Mary? अब यहाँ पे बड़ा सारा क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्या हो गया, उसके साथ हुआ क्या, that how did she die, कैसे एक्सपायर हो गया. There are lots of questions that have been asked by the people, and then the most important point that we really need to work out, we can sense the fatality and acuteness of the pain of Mary. The point is marked by the various use of imaginary symbolism. वो दोनों चीजें यहाँ देखने को मिलती है, इमेजिनरी भी है और सिंबलिज्म भी है. कहीं ना कहीं को हाईलाइट कर रहा है और डिफाइन करना है चीजों को. Then in the second part the poet uses death as a metaphor. So उसने metaphor का यूज किया. रीजन क्या था कि उसने सारे एक्टिविटी परफॉर्म किया, आपको बताया कि अब क्या होने वाला है. I read the second paragraph once again, please listen carefully क्योंकि ये पेपर में आ सकता है वाला पॉइंट. आप इसको प्लीज ध्यान सुनिए सेकंड पार्ट में दोबारा. Here it begins. Love broke into loud lamentations. The mother cried for divine explanation. Check out the rhyming scheme. Love broke into loud lamentation. The mother cried for divine explanation. Mourn swayed by the deathbed. A tent was erected. The country yard illuminated. A tearful vigil was kept up for the 2 consecutive nights. Packs of cards were brought. Recounted joked. Sympathized scaffold. Her body was bathed and scented. Utensils were rented. This is what the poet tried to convey through this poetry. He was trying to show the custom on the death of somebody when somebody had died. तो क्या क्या परफॉर्म किया गया, किन किन चीजों को हाईलाइट किया था. And then at the last sum up के लिए please write down these 4 lines. I do speak very slowly, please listen carefully. The poem seems to be amalgamate. I repeat, the poem seems to be amalgamate ordinary into extraordinary. Amalgamate ordinary into extraordinary and merges with the natural with the universe. And merges the natural with the universe. It gives us a description
It gives us a description of the typical social situation कि social situation कैसी होती है, wherein people gather to mourn the death of a young woman. And I hope यहां से आपको जो पोइट्री है हमारी क्लियर होती है. करना क्या है, अगर आपके पास टेस्ट हैं तो प्लीज टेस्ट को रीड करें, जिनके पास नहीं है वो नोट्स दे सकते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूएसडी डेफिनेट नो, आपको पता है मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पे टेस्ट करके आप नोट्स दे सकते हैं कंप्लीट, जिसमें एमबीजी 14 की पूरी पोएट्री और बेसिक सारे नोट्स होंगे उसके अंदर. टिल देन डू really if you think it's worth to watch, like, share and subscribe. Bye guys.